Assalamu alaikum. Welcome to the second episode of Ronay by Janus. Today we have again Dr. Umar and a new guest, Mr. Hamza. Hamza की credentials मैं नहीं Hamza खुद ही flex करेंगे. Hamza कर देना. And Anis will be joining us shortly. So start करते हैं. Hamza पहले flex कर. Okay. So as Abdullah said, Hamza Waqas, Mohammad Hamza Waqas Afwan अगर पूरा नाम लिया जाए, जो कि बहुत लंबा है, ये भी एक फ्लेक्स है. यहाँ से कंटिन्यू करूंगा. मुझे पता है जो फ्लेक्स मुर्शिद भाई मेरे से करवाना चाह रहे हैं बेसिकली वो ए लेवल्स का है. तो मैं ये बताता चलूं कि मेरी ए लेवल्स में 4 डिस्टिंक्शंस आई थी. ये फ्लेक्स हो गया पूरा. तो उसके अलावा मुझे जापानी भी आती है, इंग्लिश, और I know Japanese, and I don't think I have any more flexes. Or will Mr. Abdullah? Oh yes. Oh, how could I forget? Oxford Summer School. देखो बोला भी नहीं जा रहा है excitement की वजह से. So I attended a program in Oxford, and I grew up in the debating session there. And okay, so this is another flex. Thank you, Abdullah bhai, for introducing me to this platform for honing my flexes. Thank you very much. And not to mention, he's got a jawline. I'm sorry. Umar, तुमने start करना था with a question that you have in mind. Yeah, I'll start it off now. Okay, so we're basically discussing socialism, capitalism, and with a bit of the Islamic economic perspective on the side. So, if a person is to conduct himself in an economy and with a limited amount of restrictions, say in a free market enterprise, that allows the person to maximize his talents and therefore to innovate. And that's the advantage of a free market enterprise. It drives innovation. But now, what another consequence of free market enterprises is that it tends to produce these Pareto distributions. And a Pareto distribution, what a Pareto distribution is that most of the spoils, practically all of the spoils, fall to a fraction of the people who are involved in the enterprise. And therefore, it creates inequality. So free markets drive innovation and as a result create inequality. So the price you pay for innovation is economic inequality. Another, now from a psychological standpoint, since I am a psychology undergrad, so in economic inequality and human homicide have a direct correlation of almost 0.9, which is the highest correlation in all of psychology by far. It is the closest thing we know to a psychological fact. So that's a big problem that free markets are likely to produce. But if you don't have that problem, you don't have innovation. So that's the paradox right there. Now, when you talk about regulated markets, if you talk about regulating free markets such that you distribute the spoils more equally to the people at the lower strata of society, you basically look at the people who have zero. So that, now another problem that could manifest itself there is the tendency for the state to tilt towards totalitarianism, because if you give the state too much power over the markets, then you're letting the state direct things, and that could go haywire as well. So that's basically like this problem with regulated and free markets. So I think Hamza can elaborate on that further. Okay, so I will start with the system, or the market economic system, which is another name for capitalism. So if we talk about capitalism, we're basically talking about a system where the consumers, they determine the goods and services to be produced and also the quantity in which they are going to be produced. So first of all, if we look at this from a humanitarian perspective, or from the liberation or freedom of your own choice argument, we would know that consumers and the humans in general, they would have an effective argument in that
they would like to have autonomy over the goods and services they're consuming and the quantity of them, rather than being dictated by the state. So, for instance, in a capitalistic society, or in a market economic system, there are gonna be goods which are more in line with the consumer's demand. But here's the catch. For example, if consumers, they require more cigarettes or other demerit goods, they're going to be produced and resources are going to be more allocated towards that side. Now, what's the problem here? The problem is that our goods are scarce, our resources are scarce, which is the basic economic problem. If we channel more of our resources to those goods which are less important than, for instance, education or other public or merit goods, for example, healthcare. So we get to have few resources to channel in those avenues. So this is a problem of capitalism, which is also which was also a positive side of it. Now, moving further with my argument, what Umar said was that in a capitalistic society or a market economic system, there is innovation, there is efficiency. Why? The reason is that they are basically profit driven. Now, if everyone is profit driven, they're going to be looking for more avenues to expand themselves, or they're going to be looking to cut resources, cut costs. Now, for instance, let me put forth a situation. If in a society where the technological innovations have increased to that point where the robots can totally replace the human labor, the capitalistic owner would tend to use the robots in favor of the humans because he is profit driven. This will cut his costs. What's the disadvantage? Unemployment. Unemployment, living standards will decrease. Ultimately, there will be less demand of consumer goods and services, and then it will have a trickle down effect on the economy. The whole economy will tend to collapse if we do not reproduce the effective demand. So this is also a demerit of capitalism. Now, what my previous argument was that the consumer would have autonomous choice. Now, if I put forth my next argument, it will be that, for instance, imagine a company which has cut its costs to that point that all the other competition, he has banished all the other competition from the market. Now, what will happen is that he gains monopoly. Now, now that he gains monopoly, he will be able to charge any price that he wants. For example, if there is no price ceiling is a term used to describe, if price ceiling is basically a mechanism that governments enforce to ensure that the price does not increase from a particular point. So if there's no price ceiling, because we're talking about capitalism, there will be no price ceiling. What will happen is that the monopolist, he will increase his price to the extent that many of the consumers would not be able to afford it, and the wealth and the resources would be accumulated in a few hands. So this is also another demerit of capitalism. Okay, Okay, so Umar, you made 4 points. आवाज सही है मेरी? Yeah, we can hear you. Yes, हाँ, we can hear you. तो बेसिक सीन ये कि ये टॉपिक इसलिए चूज किया था क्योंकि पाकिस्तान में लाइक काफ़ी आउटक्राई हो रहा है कि यार ये कैपिटलिज्म रिमूव किया जाए, वर्ल्ड ओवर हो रहा है ना। तो मैंने ये पूछना हमजा कि इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों मतलब एनश्राइंड है इस कैपिटलिस्टिक सिस्टम में प्रॉफिट जनरेशन के लिए? क्योंकि देखो मैं क्योंकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर मतलब मैं देखता हूँ और इसको मैं कैपिटलिज्म और इसको रिलेट करता हूँ इस्लामिक इकनॉमिक्स को, तो अगर कैपिटलिज्म में से दो चीज़ें हम निकाल दें, एक इंटरेस्ट निकाल दें और एक मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डाल दें ज़कात अदा की, तो ये इस्लामिक कैपिटलिज्म है, ये काफ़ी मतलब साथ उसके मिल जाता है क्योंकि ये एक वेल्थ मतलब एक्यूमुलेशन को रोकेगा और वेल्थ क्रिएशन को आगे करेगा। तो मेरा सवाल ये था कि इंटरेस्ट इतना एनश्राइंड क्यों है कैपिटलिज्म में? Interest, Abdullah, can okay, I? sure. I'd like to answer Hamza's points before we can delve into that question. So, Sure. the first point was about autonomy of choice, right? So it's based. So what markets do spectacular. There's one thing that markets do very well, and there's one thing that they don't do quite well.
So what they do is spectacularly well is they take a complex problem, you create a hierarchical structure to solve a complex problem, and the complex problem gets solved. And some people will be better at it, and some people will not be so good at it. And the people who are better at it get paid more, and the people who are not good at it, they get the least of the spoils. So they're good at solving complex problems. But the hierarchical point aside, what they're bad at is directing where resources should be invested. So Totally. markets are good at solving problems. They're not good at giving direction to what problems need to be given precedence, and they can actually create new problems. They can, like, products can go massively out, like massively famous, and there will be products that are not good for your children, and your children will have no ability to stop themselves from Exactly. like consuming those Consuming them. those things. Exactly. Achha, so that's one of your points. And the other point was about profit. And as far as profit is concerned, um, now this is a really like complicated matter because you need you need to like generate profit if you are to survive in a capitalistic economy. But and it like you can generate profit while engaging yourself ethically within the market. However, there will always be like or like there will always be players in the market. Let's say players, okay, that are on the like psychopathic end, and they'll do anything to generate profit. And you know, there's a lot of things that are being monitored in a capitalistic society that, and you can't get away with any unethical behavior in those things. But what the people who have no ethics do is they they filter out the mechanism and they pinpoint those areas which are not being monitored, and then they exploit those areas. So the people who are unrestrained ethically, they can do they can get away with like a lot of stuff, man. And the people who do have Yes. ethics, they can like get on par with them, but they can't really beat those people. And those people are the ones who might, at the end of the day, be running the economy. And like that's a big problem too with the profit wala point. And I think you made two other points. I don't actually remember those two. Unemployment. उम्र खैर है अभी इसको उस पे आने दे क्योंकि इसमें टाइम हमें शायद Mm, बढ़ा ना दे जूम जिस तरह लास्ट टाइम बढ़ गया था तो इसको इंटरेस्ट इन आगे फिर सोशलिज्म एंड उस पे चलते हैं कैपिटलिज्म में बिल्कुल बात सही। ठीक ठाक हो गई अच्छा तो बेसिकली एक रीजन जो अभी अब्दुल्ला भाई ने पहले बात की कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन था ना मेन। नहीं इंटरेस्ट है ही क्यों मतलब बिल्कुल मतलब नॉर्मल डिमांड सप्लाई क्यों नहीं चल रहा ये इंटरेस्ट जो एड ऑन होता है जिसकी वजह से काफी आप नुकसान हो रहा है कि जो अमीर है वेस्ट में जिसने बैंक में पैसा डाला है उसका पैसा बढ़ता जाएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा अपना सब कुछ बेच के अपना वो लोन चुकाएगा क्योंकि वो उसका ओरिजिनल से उसको ज़्यादा पे करना है तो ये लोन मतलब ये इंटरेस्ट पार्ट क्यों है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज का कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज का basically let's just delve into the best intrinsic nature of economic systems जिसमें वो आपको बताते हैं डिमांड एंड सप्लाई। आप डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हर चीज में मॉडल कर सकते हैं, इवन आप इंटरेस्ट रेट्स में मॉडल कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पैसा है और अगर आपको किसी ने लेंड करना है आपने किसी को, तो एक बंदा ही तो नहीं जो आपके पैसों का कुछ की डिमांड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पूरे लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपए है और या मैं वो 100 रुपया लूंगा या उमर, हम में से सिर्फ एक बंदा रह सकता है, तो होगा क्या जब एक डिमांड आती है ना और एक सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वो आपका इंटरेस्ट रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिमांड इतनी बढ़ रही है, बैंक्स जो हैं दे can't basically can't take care of every individual's needs। वो कितने लोगों को लोन्स रिजेक्ट करते हैं और वो लोन्स खुद नहीं रिजेक्ट करते, इंटरेस्ट रेट रिजेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट बताता है कि आप लोगों की इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है। उमर आवाज आ रही है हमजा की? यार मुझे थोड़ी सी आवाज कट रही है। मेरी यहाँ से कट गई है।
सॉरी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बारी बारी। सॉरी, मेरा ख्याल है मेरा हाथ लगा हुआ था वो ईयरफोन्स वाले पे। सो आई ब्रीफली रिपीट व्हाट आई सेड। बात ये थी कि जितना लेट्स सपोज बहुत ज्यादा लोग अगर एक चीज को डिमांड करें, इन दिस केस जो चीज डिमांड हो रही है दैट इज द इंटरेस्ट रेट, दैट इज द सॉरी द लोन। उन्होंने लोन को टेक आउट करना है। सो फॉर इंस्टेंस अगर बहुत ज्यादा लोग एक ही चीज को डिमांड कर रहे हैं बट उस आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो होगा क्या, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल होंगे। अब वो जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो लोन की बेसिकली प्राइस है। तो अब होगा क्या, एक डिमांड करवाएगा और एक सप्लाई करवाएगा आएगा। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट होगा। अब लेट्स सपोज अभी लेट्स सपोज एक अभी तो कोरोना वायरस का चल रहा है। लेट्स सपोज कोई बहुत ऐसी एक स्पेकुलेशन आ जाती है मार्केट में। वो स्पेकुलेशन आपको ये कहती है कि आप जो है घर ले भी, क्योंकि आशीष बहुत बढ़नी है, ठीक है, कि एकदम से लोग दौड़ेंगे बैंक्स की तरफ कि हम बैंक्स का लोन निकाल घर हमजा तुम्हारी पे कर आवाज देंगे थोड़ी कच रही है। और उसके अलावा हमारा प्रॉफिट भी बन जाएगा। अब इस आवाज आ रही है? हाँ मैं बेसिकली वहाँ हाँ तक हमें मैं पॉइंट समझ आई हमें कि लोग बैंकों की तरफ दौड़ेंगे अगर स्पेकुलेशन या कि घरों की कीमतें बढ़ेंगी, ताकि वो उसको बेचें और मैक्सिमाइज करें। हाँ, बेसिकली एक मेरा लास्ट पॉइंट है, ये कैपिटलिस्टिक वो टूल क्यों है, क्योंकि कैपिटलिज्म बताता है कि हर चीज में डिमांड और सप्लाई को लगाया जा सकता है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें उन्होंने डिमांड और सप्लाई ऐसे लगाया कि इंटरेस्ट रेट भी बेसिकली एक प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रही है उस लोन की। सेट एक और चीज थी मेरे दिमाग में, मैं भूल रहा हूँ। फिर सोशलिज्म पे आते हैं और चीज आएगी तो मैं पूछ लूंगा। थोड़ा सा Sure. सोशलिस्टिक मार्केट तो को एक्सप्लेन करना। हाँ मैंने ये पूछना था, ये इम्पोर्टेंट है कि जब देखो अंग्रेज का रूल था हमारे यहाँ इंडिया में, मतलब जब कंबाइंड इंडिया था, तो हमारे ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं था, क्योंकि वो लेता ही नहीं था हमारे लिए, क्योंकि हम तो मतलब कॉलोनी थे ना। तो मतलब लेकिन वो फिर भी निज़ाम अच्छा चल रहा था, जितने वो कलेक्ट करता था उतने लगा देता था। तो मतलब अगर अभी भी ये पॉसिबल है कि मतलब मुश्किल ही गुजारा करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेबिलिटी मैक्सिमाइज करते जाएं, हम लोग एक्सटर्नल लोन्स लें, इंटरनली अपनी स्पेंडिंग से चलाएं, मतलब अपने जो कलेक्ट किया वही लगाएं। तो मतलब ये पॉसिबल है या क्रम्बल कर देंगे शुरू में? बेसिकली लोन्स जो बैंक लोन्स हैं, एक छोटा सा डिफरेंस है दो टाइप के लोन्स में। एक होता है ऑब्वियसली तीन, स्मॉल मीडियम लार्ज, और एक लोन होता है माइक्रो लोन्स। अब उस माइक्रो लोन से क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक माइक्रो बैंक था, बांग्लादेश में पहला खोला था, मुझे अब बंदे का नाम नहीं याद आ रहा जिन्होंने बैंक खोला था, पहला बांग्लादेश में खोला था। उससे क्या था कि हर गरीब बंदा उस लोन को बहुत कम या जीरो इंटरेस्ट में एक्सेस कर सकता था। लेकिन जो बड़े लोन्स हैं, फॉर इंस्टेंस काफी दफा ऐसे होता है कि कॉर्पोरेशंस के लिक्विड मनी नहीं होता, उनके एसेट्स होते हैं, और उनके लिक्विड मनी का प्रोसीजर वगैरह करते हो इतना टाइम वगैरह लग जाता है कि जिस डील को वो क्लोज करना चाह रहे हैं उसका टाइम गुजर जाएगा। इन केस में ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि व्हाई बैंक लोन इज इंपॉर्टेंट। अब हम इसको कॉन्ट्रास्ट करें ब्रिटिशर्स के जमाने से, तो उस जमाने में ये क्यों नहीं था। ब्रिटिशर्स के जमाने में तो आप गौर करोगे तो इंपीरियलिज्म वगैरह और सारे जो डिसीजंस हैं वो एक सेंट्रल प्लान होते थे थोड़े। फॉर इंस्टेंस आपकी क्या से थी कि अगर आप किसी इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस हो रही है, उसमें आपकी कोई से नहीं थी। वो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी करती थी, और उनके पास वो सारे रिसोर्सेज, इतना तो गोल्ड वगैरह उन्होंने ले लिया सब कॉन्टिनेंट से कि उनको बाय रिसोर्सेज में वो लेने की कोई नौबत ही नहीं आई उनको। तो इसलिए अब हमारे पास लेट्स सपोज अगर लिक्विड एसेट्स नहीं है तो हमें बैंक्स की तरफ जाना पड़ता है, और वो जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने बिजनेस चलाए हुए हैं, उनके अपना सारा उनका प्रोसीजर है, सेंट्रल बैंक से लिंक्ड है, कमर्शियल बैंक्स, जिसकी वजह से हम नागुजीर हो जाते हैं या इट बिकम्स इनएविटेबल टू यूज दोस लोन्स। सही नहीं, लेकिन मतलब जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की हर साल स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंस है कई चीज़ों में, और इसलिए हमें हर बार अपना जो इंटरनल कलेक्शन है उसके अलावा दूसरे एवेन्यूज को देखना पड़ता है। तो मतलब अगर लोग फर्ज करो लोग कहें कि नहीं हम गुजारा करेंगे जैसे मर्जी हालात हों,
और फिर पाकिस्तान बाहर के लोन्स ना ले, तो क्या पॉसिबल है कि हम सरवाइव कर पाएं, या फिर मतलब खत्म शटर हो जाएगी इकोनॉमी सारी? मेरी बात एक बात मुझे अभी याद आई है इसी पॉइंट पे। आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने करनी होती है, जो स्पेंडिंग करनी होती है, आप या फॉर्मली लोन्स लेते हैं या आप एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं। मैं पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को डिफाइन करूंगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट्स एंड द एक्सपोर्ट्स ऑफ द country. Is in the negative, it means that your imports exceed your exports, and if it is in positive, vice versa. तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि अगर पाकिस्तान मशीनरी इंपोर्ट करता है ना, तो बदले में आटा एक्सपोर्ट करता है। इसका क्या नुकसान है? आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता है। और मैं ये बैंकिंग वाली जो आपकी बात है मुर्शद भाई, वो इससे इस तरह लिंक्ड होती है कि बहुत से बैंकिंग बिजनेसेस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग। अब उनसे क्या होता है, जब आप बेसिकली उनके सर्विसेज लेके उनको इंटरेस्ट पे करते हैं, आप बेसिकली इंपोर्ट ले रहे हैं। वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके वहां पे स्पेंड कर रहे हैं अपने कंट्री में। तो ये भी एक ब्रीफ एग्जांपल है। और अगर पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस, आपने बात की कि पाकिस्तान अगर ये खुद से अपना ले, पहली बात मैं आपको ये करूंगा कि अगर आप चाइना की एग्जांपल लेते हैं, अब चाइनीज क्या करते हैं, वो कभी बहुत दफा उन्होंने अपनी गुड्स डंप की होती हैं, वो दूसरे मुल्कों में डंप कर देते हैं इतनी लो प्राइस में कि कोई भी मार्केट किसी की कंपीट नहीं कर सकती। अब लोग, आप मुझे बताएं, उन गुड्स को फेवर करेंगे या अपने लोकली गुड्स को फेवर करेंगे ताकि पैसा कंट्री के अंदर रहे? ऑब्वियसली उन्होंने कम सस्ते गुड्स को फेवर करना है। तो जो आपका मॉडल है इसलिए नहीं चल रहा, बिकॉज हमारे जो सोच है ना, वो नहीं बदल सकती। ओके उमर और हमजा, सोशलिज्म पे थोड़ी बात करते हैं। टाइम 8 मिनट रह गया, तो श्योर। उमर, आप स्टार्ट करोगे? चलो सही। या मैं कर लेता हूँ। Socialism is a weird topic. No, I can restart it. Like, Okay, you can define socialism for me, and then I can go off. Okay. On some So topics. basically, socialism is also an example of an economic system where the decisions of allocating resources and the quantity of which goods and services to be produced is decided by a central planning system, not by the consumers. It is decided by an authority, and then they signal all the factories and the industries to produce those goods and services. So that's basically socialism. And I think socialism mein phir tumhare paas, you have the concept of redistribution of wealth, which can be done through the progressive taxation system. So it's basically the redistribution of wealth, and then you have the centralized concept of a centralized economy. I think those two things are tenets of socialism. इसके अलावा कुछ है? या एक और चीज, मैं एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है इसमें, जिस तरह उमर ने अभी एक बात की कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो मोर और लेस इक्वल होती है, इंटायरली नहीं लेकिन मोर और लेस इक्वल। अब इसका है क्या कि अब वो क्या करते हैं, या जो बहुत लेट्स सपोज एक बहुत अमीर बंदा है, उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंगली ज्यादा पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस, और गवर्नमेंट उनको जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके फेवर में लगाएगी। अब आप अगर इसको मॉडल करें तो आपके ख्याल में ये थोड़ी सिमिलैरिटी इस्लामिक सिस्टम के साथ नहीं बन रही? कैसे इस्लामिक सिस्टम के साथ कि ज़कात लेना और ज़कात के पैसे गरीबों को देना। अगर मुझे एक बात पता चली कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ज़कात का सिस्टम इतना इफेक्टिव हो गया था कि उस ज़माने में एक भी गरीब डाउन मिल रहा, पॉइंट ऐसा आया था कि इतना इफेक्ट था। तो इसलिए अगर आप इस सिस्टम को इफेक्टिवली मैनिपुलेट आवाज कट गई है, तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा। आवाज कट गई है तुम्हारी। ये बहुत ब्रिलियंट फीचर है कि जब आप डिसीजन is it okay now? हाँ, it is okay. हाँ, it is. I think it's okay. I'll repeat what I said. कि सोशलिज्म में यही होता है कि आपको इक्वालिटी ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो वर्कर्स हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, एंड व्हाट हैपेंस इज कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैन सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, और आपके वर्कर्स और आपके जो सारी उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा मोर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है सोशलिज्म। अच्छा, मेरा तुम दोनों से सवाल ये आता है, यस,
जो बिल्कुल क्लासिकल जो था कैपिटलिज्म एंड क्लासिकल सोशलिज्म, ये एक्सट्रीम्स थे। बट अगर हम इस्लाम को कंपेयर करें तो उन दोनों से कुछ कुछ चीज़ें लेके काफ़ी मतलब दरमियान सेंटर अप्रोच नहीं बन जाता इस्लाम। उमर मेरा ख्याल है ही है उसका बंद हो गया शायद उमर का। हाँ, उमर रीजॉइन कर लेगा, आई थिंक, आई होप। ओके, सो टू आंसर, तो इस कैपिटलिज्म और इस्लाम के दरमियान मैं कुछ सिमिलैरिटीज रीड कर रहा था। तो मैंने एक दफा ये पढ़ा कि 6th सेंचुरी और द 9th सेंचुरी, आई डोंट नो, लेकिन एक गोल्डन एज थी इस्लाम की। उसमें थोड़ा सा जो उन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म के रूट्स जो है ना, रूट्स बेसिकली उस गोल्डन एज से हैं। इट इज नॉट प्रूवन बट इट इज स्टिल अ थियरी जो विच यू कैन फाइंड इन विकिपीडिया। और हुआ क्या कि मुसलमानों ने जब यूरोपियन कंट्रीज फतह किए, लाइक तारिक बिन ज़ियाद ने, और उंदलस वगैरह जैसे स्पेनिश वो एरियाज जो फतह हुए, तो उन्होंने अपने कैपिटलिज्म के आइडियाज वहां फैला दिए। लेकिन वो कैपिटलिज्म, इट वाजंट दैट कैपिटलिज्म जो हम आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आजकल की कैपिटलिज्म तो हो ही इसी एरा में सकती है, क्योंकि जिस हद तक प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड कर चुका है, जिस हद तक लोगों को ग्लोबलाइजेशन की अवेयरनेस आ चुकी है, ये मॉडल प्रैक्टिकल ही आजकल के जमाने में हुआ है। यार इसका मैं जो पढ़ रहा था ना, वो बेसिकली जो प्रोटेस्टेंट, जो इंग्लिश ब्रिटिश का दौर था, तो उन्होंने इंटरेस्ट लीगलाइज किया। उससे पहले जो, क्योंकि कैथोलिक क्रिश्चियन, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वो रूलिंग में थे, उनका भी इंटरेस्ट थे, उनका भी इख्तिलाफ था। तो जिसका डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, अगर सिर्फ दो चीज़ें जिसका मैंने पहले मेंशन की, अगर आप इंटरेस्ट निकाल दो और ज़कात, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वो लागू कर दो। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सीन ये है कि कुछ तो हैं जो एक्सटर्नल चीज़ें, जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट्री में आप जैसे रॉ मटेरियल कितना है प्रोड्यूस, फिनिश कितना है, बैंक में पैसा कितना है। लेकिन उसके अलावा एक बंदे के अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उसके घर में सोना कितना पड़ा है, चांदी कितनी है, इन चीज़ों पे उसने खुद देनी है। तो ये भी सीन था। बट हाँ, मैं हाँ सॉरी, हाँ सही बोलो। हाँ हाँ, तो हम अभी बात कर रहे थे उसकी सोशलिज्म की, और इसकी थोड़ी सी रेलेवेंस निकाली इस्लामिक सिस्टम के साथ। आई थिंक इट इज सेफ टू से दैट इस्लामिक सिस्टम has no similarities, has no we can say that concrete similarities between capitalism or socialism. Islamic system is unique of its own. लेकिन अगर हम सोशलिज्म की अगर हम बात करें, उसको उस पर एक्सपैंड करें, सोशलिज्म का एक, सॉरी, यस उमर, हेलो उमर, आवाज आ रही है? हेलो उमर, आ गया? हाँ, अब आ रही है। अच्छा Hamza, I wanted to expand like on some of your points. Yeah, I can't hear you. चैट में आवाज आ रही? हाँ Hamza, तुम्हारी आ रही है आवाज अब। हाँ तो बोलो ना। सही है, अब मैं बोल रहा हूँ। Okay, so you compared socialism, the concept of progressive taxation in socialism to zakat in Islam, and I think there's an important distinction to be drawn here, that under a socialist system, the redistribution of wealth would be imposed by the government and therefore would be involuntary. Whereas when you talk about zakat, it's under the like voluntary choice of an individual whether or not to give zakat. And if you're in an Islamic state governed by the Sharia, then most people are going to give zakat, because then you have people who are religious and they abide by the universal Islamic law. So, yeah. Umar, can I add it? But it's voluntary. That's an important distinction to be drawn. हाँ नहीं, voluntary, you were saying it is something? both voluntary and involuntary. उमर, इसका सीन ये, जिस तरह कुछ चीज़ें जो पता चलती है ना लोगों को, जिसके लिए घरों में जाके ही चेक करना है कि बैंक बैलेंस कितना है, इसकी ज़मीन से प्रोडक्शन कितनी है, फैक्ट्री से कितने फिनिश गुड प्रोड्यूस कर रहा है, कितना रॉ खरीद रहा है, ये एक ओपन चीज़ है। इस पे तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको टैक्स कर सकती है, जो करती भी है गवर्नमेंट। बट अगर कुछ चीज़ें जिस तरह के कितना घर पे कितना सोना वगैरह छुपाए, तो वो घरों की तलाशी नहीं लेंगे।
बट वो आपके अपने ऊपर है कि आप पे करो या ना करो, तो वो एक वॉलंटरी हाँ चीज तो आ मैं यही जाती कह है। रहा ना। लेकिन मतलब ये दोनों एंगल्स हैं यस इसमें। यस बट द बिल्कुल थिंग सही। इज कि इसमें नॉर्मल ये कह सकते टैक्स हैं कि वो सिस्टम, जो सॉरी हाँ मैं कह रहा था नॉर्मल टैक्स सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू वट एवर यू अर्न। तो उस हिसाब से यू, उसको क्या कहते थे, एक तो लाइक एबिलिटी टू पे वाला टैक्स सिस्टम होता है और दूसरा वाला क्या होता है जो एथिकली करेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं हमजा? योर एथिकली बेसिकली यू करेक्ट हैव अ टैक्स को फिक्स्ड, एक हाँ मुझे, फैसिलिटीज जितनी अवेल करते हो, एक एबिलिटी टू पे और एक हाँ फैसिलिटी अवेल। exactly तो you pay taxes according to the facilities you avail from the government। तो वो वाले taxes तो in place होते हैं, but then you complement that system with zakat and I think land पे क्या होते हैं, उधिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उशर, फराज, उशर, लैंड उशर, पे होता था फराज उशर हाँ होता क्या था। आई था? गेस आई गेस ऐसा ही था। हाँ तो those are two हाँ different things and व्हाटएवर इट वाज उशर is, हाँ the usher is 25% and zakat is 2.5%. So हम्म, that's voluntary redistribution of wealth. You can term it that way. And the हम्म, difference between, हम्म, and then you can have a normal taxation system based on the services you avail from the state. Okay, this in हम्म, comparison to the socialist system of just redistribution of wealth according to the ability to pay, which is हम्म, like it's imposed by the government. So there are some important distinctions to be drawn here. So there एग्जैक्टली might be some एग्जैक्टली similarities, but they're very, very different. Yeah, I was gonna delve deep into that Yeah. afterwards, but अगर हम इसी के accordingly मेरे अभी दिमाग में बात आई, मैं एक इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो सबसे ज्यादा डॉक्टर्स इन डिमांड है इस वक्त वो क्यूबा के हैं। Why? क्यूबा इज अ सोशलिस्ट कंट्री। क्यूबा के सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांडेड डॉक्टर्स हैं बिकॉज एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है। अगर आप सोशलिज्म अपना रहे हो ना एक कंट्री के अंदर, यू आर बेसिकली फॉर्मिंग अ कल्चर एंड दैट कल्चर इज बीइंग स्प्रेड इनटू योर होल कम्युनिटी। अब हुआ क्या है उससे कि डॉक्टर्स जो हैं दे आर वॉलंटरली दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज, दे आर प्रिपेयर टू गिव अप देयर लाइव्स टू वर्क एट द फोरफ्रंट। और जिसकी वजह से, और ये सिर्फ ये जाके कंफर्म कर लें, क्यूबा में सबसे ज्यादा डिमांड हो रहे हैं डॉक्टर्स। तो मेरा ख्याल है कि सोशलिज्म की वजह से एक ऐसा कल्चर भी डेवलप होता है कंट्री में जो कि इज एन आर्गुमेंट ऑफ इट्स ओन। बट आई थिंक इसके अगेंस्ट भी एक पॉइंट में पेश कर लेता हूँ जो क्या कहेंगे, जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है सोशलिस्ट कंट्रीज के, उसके अगेंस्ट you have Cuba as that example. So that's the positive side of it, I guess. But then you have the negative side, and we can take Venezuela as an example. So with Venezuela, and it's a socialist country, so yeah. So what's happened in Venezuela is that the level of starvation has reached to a point that it's illegal to enlist starvation as the cause of death for a patient. So yeah, that's actually been implemented on a governmental level. And the another like astonishing statistic would be that of the average Venezuelan citizen having lost 17 pounds like since the inception of these like socialist policies. So that's something, man. So it basically alludes to the failure of a market to produce enough not food, and that's something to be taken in हाँ, so account for. So that's what doesn't necessarily I'll happen in I'll capitalism. sorry पे ये वही सीन नहीं है yeah, I'll add तुर्कमेनिस्तान का something to कि this, दैट यू Umar. बैन कोरोना वायरस एंड देन इसका मतलब कोरोना वायरस आपके मुल्क में आया ही नहीं, आप वर्ड ही बैन कर दो तो डॉक्टर्स कांट यूज इट कि हमने टेस्ट किया और बंदे को कोरोना वायरस आया। देयर लाइक तुर्कमेनिस्तान हैज जीरो पेशेंट बिकॉज़ नाम ही यार उमर की I बात पे wouldn't मैं be एक too चीज sure about that क्योंकि specific examples चाहिए। उमर तो आपकी बात पे एक कोशिश मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अब ये बेसिकली डीमेरिट भी हो Hamza, I जाएगा can't hear सोशलिज्म you. का। अब ठीक है उमर, मैं आपकी ना बात पे एक चीज वो ऐड करना चाह रहा हूँ। आवाज आ रही है अब यार? पॉडकास्ट में आ रही है हमजा, क्योंकि मुझे आ रही है तो मतलब मेरी रिकॉर्डिंग में आ रही है, तो तुम बात कर लो, Hamza, बाद में देख लेगा। I can't hear you. ओके, तो बेसिकली होता क्या है,
कि आप अगर लेट्स सपोज सोशलिज्म की बात अगर करते हैं और हंगर वगैरह रिसोर्सेज सही तरह एलोकेट नहीं हो रहे, तो एक नुकसान होता है सोशलिज्म का, विच इज करप्शन ऑब्वियसली. अगर इफ यू आर सेंट्रली प्लानिंग, तो एंड बेसिकली इफ यू वांट टू लाइक एम्बेलिश सम रिसोर्सेज या कुछ ऐसा, तो आपके पास कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा ऐसे टेम्प्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, रिसोर्सेज जो है वो सही तरह एलोकेट भी नहीं हो पाते. अगर करप्शन का मसला है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हंगर वगैरह इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो, गवर्नमेंट अगर इफेक्टिव ना हो तो वो आपकी आवाम के बारे में इतना सही तरह सोचेगी नहीं. यार हमजा, मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि जिस तरह But सोशलिज्म Hamza, में, I think हाँ उमर, though I was saying it's not limited to just like people being corrupt. We can trace this back to possibly 100 years back. Do you know about what were they like the famines in Kazakhstan, Turkmenistan, Soviet Union ke andar, the famines in the Soviet Union, where 8 million kulaks died. Okay, that's it. Do you know about that story? No. लेकिन हाँ ऑफ So कोर्स उमर I'll कुछ tell you a bit डीमेरिट्स about रहे that होंगे story सिस्टम then. के, इसीलिए इट I फेल think there's अपार्ट a बाय lot of 1990s, demerits, you know. man. Well, it's taking like it's surging uh, back, man. लेकिन तुम लोगों को मैं एक no, बात the thing बताता is हूँ, कि मैं उसके उस यूएस यूनिवर्सिटीज में देयर before that मुझे So, do I रोशन elaborate एक on the सेकंड Soviet famines? हाँ हमजा, एक सेकंड एक सेकंड यार, मेरी बैटरी इज ऑलमोस्ट रन आउट, सो आई वोंट बी एबल टू स्टे हियर एनी लॉन्गर. अच्छा ये बात सुनता जब यूएस यूनिवर्सिटीज में, आई सब आई तो हाँ डोंट ठीक हाँ है. रिमेम्बर द नेम्स, बट ना सीन ये कि वहाँ पे देयर रिसर्च गोइंग ऑन के अगर कैपिटलिज्म खत्म होता है तो इट माइट पॉसिबली रिजल्ट इन लाइक अ वर्ल्ड ओवर क्राइसिस, क्योंकि ये इतना इंश्राइंड हो गया है ऑल अक्रॉस के, अगर ये खत्म अब हो गया तो बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा. लाइक देयर सजेस्टिंग कि फिर वॉर्स ब्रेक आउट करेंगी और इस तरह की चीजें. किस चीज से वॉर्स ब्रेकआउट करेंगी, सॉरी रिपीट करना ब्रीफली. हाँ वो मतलब रिसर्च ये चल रही है और कुछ कुछ रिजल्ट्स आए हैं कि इफ कैपिटलिज्म मतलब खत्म हो जाता है तो फिर वर्ल्ड ओवर एक क्राइसिस मतलब आ जाएगा जिसमें वॉर्स ब्रेकआउट करेंगी या इस तरह के काम हो जाएंगे. हाँ, ये दिस इज पॉसिबल, ये पोटेंशियली इसको एक आर्गुमेंट कहा जा सकता है. द रीजन व्हाई इसकी बात की जा सकती है क्योंकि जब आप एक सेंट्रली प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी होगी विच इज इन चार्ज ऑफ प्रोक्योरिंग द रिसोर्सेज एंड चैनलिंग देम टू द सोसाइटी, तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल इन केस अगर आपकी वो हंगर हो रहा है, भूख भूख से मर रहे हैं लोग वगैरह सब कुछ, तो एक तो पहली बात, अगर आप एफिशिएंट नहीं रहे थे बीइंग अ सोशलिस्ट, तो आपके रिसोर्सेज बहुत इनफेक्टिवली यूज होंगे. सेकेंडली, अगर आपके रिसोर्सेज जल्दी रन आउट कर गए हैं तो हो सकता है आप टेम्प्ट हो फॉर गेनिंग रिसोर्सेज बाय इन्वेडिंग अदर कंट्रीज, हम्म, which is which is basically what we can say England did to us, did to the subcontinent as a whole. हम्म, We can say that. हाँ. तो एक और चीज़ मैं देख पढ़ रहा था हमजा कि जब सोशलिज्म है तो उसमें Mm-hmm. सीन्स ये होते हैं कि, आवाज़ आ रही है? आई गेस दोनों चले गए, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. Like, comment, subscribe. If your topic that you want us to discuss, please tell us in the comments.